Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Prafulla Samantara. And first time is on our channel. He's a very well noted environmentalist. Recently, he has been kidnapped in Orissa. By whom? And that too during electioneering. Election जब चुनाव के प्रक्रिया में प्रफुल्ला समंतरा को किसी ने किडनैप किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो पर्यावरण के लिए लड़ते हैं, जीते हैं और पर्यावरण की संस्कृति ही बात करते हैं। तो आज इनके बारे में थोड़ी बहुत, क्यों पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, गोल्ड मैन एनवायरनमेंट प्राइज विनर एंड नोटेड सोशल एक्टिविस्ट प्रफुल्ला समंता टॉक्स टू सुधीर पटनायक, जो इसके रिसेंटली उनको क्यों किडनैप किया गया और उनसे हम बात करेंगे। और ये वेदांता माइनिंग कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वहां से इनका नाम ऊपर उभर के आया है। ही इज बिकम फेमस बिकॉज ऑफ अपोजिंग माइनिंग by Vedanta and all. That's why I will fondly refer to him as Vedanta Prafulla Samantara. That is how I remember him, the way he fought. And that too in Cuttack, when I was doing a show exposing how mining, illegal mining, taking a heavy toll there, women came out there. But unfortunately, the same MP who has been very close to Honorable Chief Minister, Mr. Patnaik, he tried to subdue everything. But still, we are here to bring out all the facts. And before that, people were asking me, why are you not wearing, you usually wear a waistcoat and all. I am doing a show from Kerala. Horribly, so much of rain, so much of water. Every now and then, since morning, I have sent a mail to KC Pinarayi Vijayan. Every year, the same problem. Power on and off fluctuations. I am losing my equipment. KSEB, Kerala State Electricity Board, Pala, AE, she's a lady woman, we respect her. How many complaints I have sent her? Not bothered. And literate state like Kerala, already we have seen how a health bill has been passed. They are not bothered about resources. So much of water, where is it going? Why are we dearth of electricity? What is happening with India? When elections are there, why we are not talking about resources and rights? क्यों हम हमारे हक और हमारे हक जो है, हमारे रिसोर्सेस हम जो कहते हैं, पानी से लेके हवा तक कुछ हर एक नागरिक का है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती? यही है आज का मुद्दा। मैं बीच बीच में उनका रिसेंटली वो लद्दाख भी जा चुके हैं, मैं वो भी वीडियो से भी बताता हूं। सर, फॉरवर्ड, पहले क्या कहना चाहते हैं आप? किसने आपको किडनैप किया और ये वेदांता का समस्या क्या है, लोगों को बताइए। Welcome to Mr. Reddy, and thank you for your novel work. Impartially, unbiasedly, you are doing a great job creating opinion through the free debate and free discussion about the national policies, politics for people's interest. So again, I would like to thank you with heart. The question you put me, why I was kidnapped. Actually, I was kidnapped on 29th August 2023 from a small hotel in a district, Rayagada, that is the tribal district. And I had been to meet the people who are struggling to protect their resources and opposing Bucks Vedanta company, and they are put in jail. I had been there to meet them and also arranged advocates to fight their cases. And before a press meet on that day, I was kidnapped from the hotel forcefully by 3 people, and
in daylight because it was just like afternoon 3:45. And I thought that it was goons of Vedanta company. But ultimately, when the media came to know that I was kidnapped before my press meet, so that became the great news in Odisha channels and throughout the country. Many people like Medha Patkar, many advocates of the Supreme Court, many people, they telephoned, they tried to know who is kidnapper, who was kidnapper. Then the government of Odisha was compelled to investigate, and it came to know that their big police officers, IPS officers, they have done for the company, for the Vedanta company, because 3 times Vedanta company in the last 10 years, they have failed to kidnap me. They tried to kidnap me, but they were forced to release me by the people. So this time, the government, the police officers, they did it. And ultimately, the government compelled them. So I was released. But till now, though I have filed a file, though the Odisha High Court has asked me to pursue the matter, investigation not going on till now because it is done by their own police officers for the interest of Vedanta company, because Vedanta company has violated all the things, and the government of Odisha and the government of India, they favor all the the corporates how to exploit our resources at the cost of livelihood, at the cost of environment, at the cost of also climate justice. So this is a fact that it is my life. It is just it is a common thing for my life through the struggle. Which So it district? is not a big Which matter. district? It is not a big matter for me. Which district it is in Orissa, and which police It station you have filed an FIR? is a Rayagada district, now the people are struggling also in the Kalahandi and Rayagada to protect their resources, because since last 25 years, people are struggling, and 3 people are sorted in 2000 because they are fighting against the Birla company. So that mining took place there after firing the people. At that time also, I was booked in attempt murder case to justify the firing, but till I was exonerated by the Judicial Commission. So all these things took place. Now people say that don't destroy resources, don't finish everything, because the tribals, the Dalitas, they think and they say that this is our identity with the nature. Don't destroy our resources in the name of development, because this development is not for us, they are for profits of the corporates and for accumulation of capital by a few people, and also political agents, political parties, they take money from companies and they destroy us. So that's it, the struggle is going on by the people against the corporate, against the policy of the government. Yeah, that has been exposed by Supreme Court. Thankful to Supreme Court electoral bonds. Quid pro quo. Yes. 994 crores by the 9 mining company have given to the regional party BJD, Biju Janata Dal in Odisha, and also Vedanta company itself has given more than 400 crores rupees to the BJP, the central government, the ruling party, through these bonds. So this is politics. And Congress, you know that many political parties also. Congress did not get anything. And the Congress also got it. I say, because they want to satisfy all the political parties. Because all political parties, they do not oppose corporatization of politics. They do not oppose the destruction of resources in the name of development. They are with the capitalists, they are with the corporates, they are with the IMF. They are not talking of any sustainable development. They talk it, but in practice, they do the opposite. But Patnaik considered to be one of the honest chief ministers. But this is also a politics of development. This is also the media, how they are they control the government policy. That is also called as corporate capture. So corporate has captured media, corporate has captured the governance politics, captured also the policy makers. So they say the entire, the mainstream media in India, from regional to national media,
They are under control of corporates. And corporate interests to serve the interest of the political people in power. So they say that the company that the Vedanta, that the Naveen Patnaik is so honest. But if he's honest, I can say where money comes, hundreds, thousands crore rupees for the elections, the political parties. Even the Modi, the Prime Minister, claims that only Congress was corrupt. Congress was corrupt. But now the central government, BJP government is more corrupt through this electoral bonds. Is the biggest scam in the world. That is the told by many economists, many political analysts also. So this is going on, how the corporate media tries to make image of Naveen Patnaik, whoever may be the power in the party. That is the politics of today in India. I say now the politics is controlled by the corporate money. And now recently in Modi, in election rally, he says, Naveen Patnaik doesn't know anything. You see, for last 10 years, they have honeymoon. Okay. That is there is a honeymoon between Modi and Naveen Patnaik. Here, the BJP, the first opposition political party, but they will never challenge the Naveen Patnaik's leadership, nor the corruption. And both of them, and Naveen Patnaik has been supporting all anti-people law made by the Modi government. And also, entire the even chit fund, everything that CBI came, they did nothing. They could do something in West Bengal. They could do something in Maharashtra, but not here. So this is honeymoon. So now, because they have a mad decision to fight together, but however it failed, but now they speak against each other only to be in the people. They don't want any third party to be really opposition party. So both of them understanding in this election. So now the Prime Minister, the way humiliates the Chief Minister, this is also not a good democracy. We say what is Congress doing? What is Congress doing? Congress is a weak here. Congress has also this in Odisha, I can say, with all this, Congress party has not realized at least how to make more vibrant, more effective, and more alternative in Odisha. Because in India, I can say, now the Congress, though not Congress, but at least Rahul Gandhi had made some amendments, have some made clear policies, which Congress did not do it for the last 10 years. But till now, this Odisha Congress has failed to follow even Rahul Gandhi. That is the whole trouble. Because the Congress party in Odisha, many people are with also Vedanta company, with also another company. So that is the interest of Indian politics. People have no alternative. Orissa is Sarvam Vedanta, Honorable Chief. Yes. And Honorable Prime Minister Modi ji, now you have to clarify to the people of India. Yes. Sarvam Vedantam. And all our resources, हमारा सब कुछ जो भी है पानी से और जमीन के नीचे जो खनिज हम कहते हैं मिनरल्स, उसका भी लूटी हो रहा है। और किस तरह पर्यावरण को नाश करके और वहां जो आदिवासी गिरिजन जो रहते हैं उनका पूरा जीवन हस्त व्यस्त करके जब लूटा जा रहा है वेदांता से, पटनायक जी आप कहाँ हैं? प्रधानमंत्री पटनायक जी के साथ भी राहुल जी आप कहाँ हैं? यस, सो पटनायक के साथ मोदी जी है। अभी अदानी आ गए माइन के लिए यहाँ। सो बोथ पटनायक एंड मोदी मिलकर उड़ीसा का जो प्राकृतिक संसाधन, और वहां के आप जानते हैं कि उड़ीसा में 23% आदिवासी है, जिनके पास जो भी जंगल में है, और जहां जंगल है वहां खनिज है, जहां खनिज है जंगल है वहां पानी का स्रोत भी है। तो आज अभी ये जो लूट होता है, और लूट होने के लिए जो जितने भी कानून था वो कानून को भी धदिया उड़ा दिया, वो कानून भी वीक कर दिया गया और अमेंडमेंट कर दिया गया। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को बदल दिया गया, जैसे कॉर्पोरेट्स के हाथ में जंगल चल गया। 28% ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस अमेंडमेंट, दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट।
that amendment by 2023. And now the Supreme Court has studied, but the things are going on. So how to destroy the forest, everything, and handing over to the corporates. So here also in Orissa, Chhattisgarh, everything, now every law has been openly changed how to hand over the resources to the political parties, and now political parties are getting this handovering to the corporates, and corporates are feeding the money to these people in power. So this is going on, and this election also, we never found any that there is a manifesto. Everybody they claim that give us vote, we will give something, we will give electricity, we will give ration, but no political party speaks that we will stop destruction of resources. We will do not allow that rivers will be destroyed. Nobody says that we will not allow the unmindful mining that destroys the right of the future generation over the resources. Nobody says that we will follow the constitutional obligations, constitutional laws, that is the First Right Act, PESA Act, and also 5th schedule and 6th schedule of the Constitution. No political party speaks because everybody do not want to dissatisfy corporates who are controlling the political parties through their black money. So that is it. इसीलिए हम आरएसएस आपका जंगल अरण्य का एक शाखा होता है आरएसएस महादेव। क्या हो रहा है आप? क्या हम आप देखिए जंगल को कटवा दीजिए? क्या आरएसएस पूरा तरह की ये मोदी सरकार चल रही है? मोदी नहीं, हर कोई, कांग्रेस, राहुल गांधी नींद में है, मल्लिकार्जुन खड़गे नींद में है, और बीजेडी, आप हॉनेस्ट है पटनायक जी, आपने शादी भी कुछ नहीं किया, आपको कोई परिवार नहीं जैसा मोदी के जैसा, लेकिन आप दोनों मिलकर ये जंगल का जो नियम था उसमें सवरण कैसे होने दिया, और जंगल हम ऐसे कारपोरेट कंपनियों को सौंप दे खनिज के लिए, किसके फायदा के लिए? जब जंगल खत्म हो जाए क्या हम रह पाएंगे? जंगल में जो जीवन और जो हमारे पेड़ पौधे रहते हैं उसके बदौलत ही बारिश आती है, बारिश का मौसम, और हम जीने का जो मौसम है, हम जिस तरह जीते हैं, ये सब हमारे जंगल और ग्रीन कवर एरियाज के ऊपर ही निर्भर है। क्या ये सिंपल था आपको नहीं पता है पटनायक जी? जब मोदी जी, और आपको तो कोई फैमिलीज ही नहीं है, आपको कोई कुटुंब का भारी नहीं है, फिर आप लोग इस तरह बड़ी साजिश कारपोरेट्स की उसमें कैसे फंस गए और कैसे जंगल नियम को सवरण किया है? आरएसएस आप बताना चाहिए। आप देखिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं आप, क्या हो रहा है? हमारे जंगल जब खत्म हो जा रहे हैं और हमारी जीवन वर्तमान और हमारे भविष्य जब खतरे में है और खत्म हो रहा है, आप लोग चुपचाप क्यों है? और ये मुद्दे चुनाव में क्यों नहीं है? Why such important issues like Forest Amendment Act has done in favor of corporates who are mining for those vital minerals, in whose interest, if forests go away, if green cover areas go away, can we have monsoons, rainfalls? Can we have these temperatures? Because you have started meddling with Himalayas, because you are destroying forests everywhere in the country. See, the country has become very hot. Either it is too hot or rains are flooding. आप इससे छेड़छाड़ किया है हिमालय से लेके हमारे जंगल को, इसीलिए आप विकास के नाम पे जो किया है, इसी के लिए ज्यादा गर्मी या नहीं तो तेज बारिश, ये जन के हित में है क्या? जन जी पाएंगे? आप देखिए, आप जो बात रखिए ना, ये बात तो सही है, मगर उसके पीछे क्या है? आप देखिए उसके पीछे क्या होता है ना। आप देखिए जो अभी वेस्टर्न घाट में, जो पश्चिम घाट में, जो हिमालय और पश्चिम घाट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, और हमारे यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, तो ये देखिए उनके साथ क्या जो नदियां जुड़ा हुआ है। अभी ये जानबूझकर ये किसको दिया जाए? आप देखिए जो जोशीमठ की जो खतरा हम देखे, और अभी जो ये धाम में देखे, तो ये पूरा बर्बाद होता है। और हम कभी गए थे जो लद्दाख में, हम देखे वहां पर जो बर्फ को खत्म करने के लिए
वो जो मेल्टिंग ग्लेशियर को खत्म करने के लिए अब अडानी और लोगों को पहुंचा दिया मोदी और शाह, ये दोनों मिलकर। वहां के लोग अब सोचते हैं कि हमारा जो संस्कृति, हमारा जो आजीविका, ये पूरा हिमालय के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी अभी आप देखिए कि जो वेस्टर्न घाट में कोल माइंस दिया गया, आपके थोड़े वीडियोस बताऊंगा। तो और ये इसलिए कि पश्चिम घाट जो है केरला में, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टीज भी उसी लूट में है, हम उनको भूल गए। आज मैं गया था लास्ट ईयर, मैं गया था वहां। हमने बोला कि भाई तुम अदानी को क्यों लाए पोर्ट के लिए? वहां पर लोग जो मछुआरे लोग विरोध करते, द फिशरमैन और अपोजिंग, एंड आई जॉइंड द सत्याग्रह. I told them also, the political party, we are with you because at least that you are opposing fascism. But when corporate comes here, you do not oppose, because Kerala is the state of God. We want Kerala should still remain as Kerala, at least to make people, other state people, to aware of how nature is very important. CM Pinarayi Vijayan's own daughter, she has been booked under ED also. She has taken Yes, from mining company. That is fact. He is doing a so far committing a mistake that will harm also the left unity, left parties. So we want it also. I've done a show also. Pinarayi Vijayan civil life. नहीं मंथरा जी, जब उन्होंने प्रतिपक्ष में थे, एक बुक लिखा है पिनाराई विजयन, उसका शो भी मैं किया है यहाँ पर। जब वो कहते हैं कि हम किस तरह हमारे खनिज और हमारे कोस्ट लाइन को उसको संरक्षण करना है, जब पावर में आते ही आप बोले जैसा अदानी जैसे सभी लोगों को यहाँ कारपोरेट्स को इन्वॉल्व करते हैं, और वो पैसे से उनकी खुद की बेटी आज फंसी हुई है भ्रष्टाचार के। सिल्वर लाइन, रेल लाइन इज नॉट नेसेसरी। मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी केस है उनके ऊपर। फिर नहीं, ये बहुत हमारे लिए खेत की बात करता सर। इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते इसके ऊपर? कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं बात करते? जो स्वास्थ्य का नाम पे बिल डीएमके लाया तमिलनाडु में, यहाँ पर केरला में इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी बात ही नहीं करते, मल्लिकार्जुन बात ही नहीं करते, समाजवादी पार्टी उसको तो पता ही है नहीं, अखिलेश यादव जी को। आप देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं ना, ये लोग इस तरह हो गए, उनको केवल सत्ता चाहिए, और सत्ता को लेकर ही सत्ता के साथ ये लोग पकड़े भी गए भ्रष्टाचार में। जो नोटबंदी हुआ नवंबर 8 2016 में, उसमें सभी राजनीतिक दल पकड़े गए। इसीलिए मोदी और अमित शाह जो भी कर रहे हैं, जो भी सवर्ण पार्लियामेंट में लाते हैं, कांग्रेस से लेके इंडिया ब्लॉक पूरा गायब हो जाता है, वहां से चर्चा ही नहीं होती है पार्लियामेंट में। और हर एक बिल ये से लेके फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, एनवायरमेंट अमेंडमेंट बिल, दूसरी बात है पास हो जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो सरकार है ना, वो भी डिबेट के लिए इजाजत नहीं देता है, वो डिबेट चाहते भी नहीं है। नहीं, मैं आप एक मान लेते हैं, बीजेपी इजाजत नहीं देता लोकसभा में, क्योंकि वो लोग पूरे कारपोरेट्स और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पूरा खुलासा हुआ उनके से मिले हुए हैं। लेकिन ये चुनाव में क्यों कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, या हमारे बिहार के जो है वो परिजन, वो लीडर क्या नाम है, लल्लू यादव का बेटा, वो यादव, या डीएमके हो या कम्युनिस्ट पार्टीज, ये लोग चुनाव में ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? जो भी लोकसभा ये तो सही है, नहीं हुई है, क्यों नहीं उठाते? आज ये सब हम उसके साथ, हम उनके साथ डिबेट करते हैं। हमारा भी ये इंजाम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज देश में कॉर्पोरेट के चंगुल से फ्री नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, कि जनता पॉलिटिकल पार्टी को पूछना जरूरत है। Let people, voters should ask every political parties where you are getting funds. Secondly, what is your policy? What is your implementation when you are power? That you have to keep our resources for future. इतनी गर्मी हो गई, थोड़ा हम मजाक, so that question does not, थोड़ा मजाक लेते हैं, तो इतनी गर्मी हो हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे, पूरे देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे,
पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने या 10 सीट दे दीजिए हम तेलंगाना को देश क्योंकि का ज्यादा नंबर गर्मी हो गई 1 हमारी राज्य डिस्कशंस में, बनाएंगे। थोड़ी बहुत तो हम उड़ीसा लोग नंबर 1 बनाएंगे। कर्नाटका को ओके 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 पूरे हंसी देश मजाक का की जिंदगी है सर। नंबर 1 राज्य बनाने 10 सीट दे दीजिए हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 राज्य उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। कर्नाटका को जा पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने क्योंकि लोग पूछते हैं, आप बहुत सीरियस डिस्कशन, इसीलिए बीच बीच में आपको भी मैं अभी नहीं 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 अभी अभी उड़ीसा से भी यही बात रखते हैं ये दोनों उड़ीसा, बोलते हैं उड़ीसा कर्नाटका, को हम तेलंगाना, जहां पर भी चुनाव होता है हर एक राज्य नंबर 1 बनेगा। नंबर 1 होता है। किसी में उड़ीसा उड़ीसा नंबर को 1, बोल दिया नंबर 1 किसी में सहज संपत्ति की लूटी में आप नंबर 1 रहेंगे। आप आपस में यस लड़िए, हम कारपोरेट्स को यस बेचेंगे, सहज संपत्ति को हम लूटी करेंगे और आप लड़ते रहिए। तो और थोड़े आप जहां गए थे, मैं थोड़ा ये भी वीडियो प्ले करता हूं। आप जब लद्दाख में थे तो उसका भी एक, लद्दाख में आप जब थे, अयो थोड़ा साउंड क्या हो गया है ये, व्हाट हैपेंड टू योर साउंड? माइट बी डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं नहीं, अब आता। अच्छा तो ये दुनिया भर में चलता है कि पहले माँ प्रकृति को बचाने के लिए, तो प्रकृति जो माँ हम धरती माता बोलते हैं, और दुनिया में सबसे बड़ा संकट अभी वो हम नहीं बोलते। ये जो संकट देश भर में, दुनिया भर में 11,000 वैज्ञानिक 2019 में फ्रांस में एक प्रेस मीट करके बताया, और हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे कि जब पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ था धरती माता को बचाने के लिए, भारत भी तो हो जाएगी। तो आदिवासी की तो आंदोलन उनको रोक लिया, फिर भी कंपनी लोग है सुप्रीम कोर्ट को, सरकार भी गई सुप्रीम कोर्ट को, उड़ीसा सरकार, हम भी गए उसको विरोध करने के लिए लोगों की तरफ से। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट की राय आई, वो राय में बोला गया जो 5th शेड्यूल में जो अधिकार है समाज का, अगर ग्राम सभा तय करेगा तो वहां माइनिंग होगा या फॉरेस्ट जंगल दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। वहां सरकार नहीं, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना कंपनी, ना कोई भी नहीं है, वो ग्राम सभा अधिकार है। उसके बावजूद वो रह गया, बच गया नियम। मगर ये सुप्रीम कोर्ट की राय बाद भी हर देश वो नहीं लागू होता है, सरकार मानती नहीं है, तो हम काम करते हैं, गोली खाते हैं। आज भी हम इसलिए बता जाता, या इसके ऊपर भी हम आएंगे आपके पास 5th शेड्यूल, क्योंकि लोगों को ग्राम सभा, लोग वहां के पंचायत के ऊपर, पंचायत ये पास करनी है, और ये जो आपने किया है मैं इसको भी कंपनी माने आक्रमण करचंती, काशीपुर आरंभ करी शारीरिक आक्रमण करचंती, आक्रमण करिया पर तुम के विचलित ही नहीं, पुणी बारंबार जाइछु, पुणी 2-4 थर व्यवस्था, संविधान अधिकार को सुरक्षित करवा। पटनायक जी और वहाँ उड़ीसा के पूरे राजनीतिक दल को उनको समझ में आना, इसीलिए थोड़ा वरिया भी मैं प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी के हित में है, सभी के मत में है DRTSPR चालू। एवं आ गोटे कथा होची जे आमे जब जन आंदोलन करछि, मो भरिया व्यक्ति माने बा निरंतर विकास पाई बा पुंजीवादी अर्थनीति बा विकास प्रक्रिया विरुद्ध रे एक जनवादी राजनीति आवश्यकता अछि, किंतु सारा देश रे बा हम ओडिसा रे भी देखिबा सेटा एते संभवपूर्ण नियर नहो। किंतु जेते बेले वर्तमान आमे देखुचे जेते बेले पूरा केंद्र और राज्य रो सेठी बीजेपी और बीजेडी सरकार
संपूर्ण भाव में कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहतु जहाँ भी कहतु पूरा कॉर्पोरेट मानकर नियंत्रण रे राजनीति प्रशासन सबकिछि अछि सेतेबेले विरोधी दल मानक भितरे जेतेबेले से कम्युनल जो घृणा राजनीति हो कि पूरा सेठी गोटे संघर्ष और एक लास्ट वीडियो है वो भी बताने की कोशिश। हाँ, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी क्या हो रहा है ये भी देखिए। Hello friends, I welcome you all on my channel, The Opinion Platform. The issue of Hasdev Aranya has hit the headlines once again. Those people who work around, who research around people's movement, they understand the significance of government winning and a particular government losing. After BJP has won election in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan, once again, the attack on nature, environmental concerns have come in the front line. To speak on this issue, specifically about Hasdev Aranya movement, I'm in conversation with Prafulla Samantra, a very senior activist who is advisor. Are you a parent of a high school student? Oh, again ads. Does your child So want I'll to come prepare back to for you. JEE Stop and sharing NEET? because you are Then I here. have I something don't very want to play important to that. tell you. I am Balaji Sampath and I founded AHA Group. Oh, But more importantly, Man Environmental Prize at the चलिए। यस सर, हसदेव एनवायरनमेंट मूवमेंट क्या है और बाद में फिफ्थ शेड्यूल 8 मिनट है, फिफ्थ शेड्यूल क्या है उसके बारे में। You know that this is the Hasdev Aranya is the longest forest in the country, and it was declared as a no-go area. But for the interest of the Adani company, the government of India compelled the state government and also to open of the coal mining. The people struggle, especially led by the tribal communities. This is in Chhattisgarh, right? Chhattisgarh. This is in Chhattisgarh. Yes. Yeah, please. Chhattisgarh. Yeah. And they have been protesting through peaceful manner, and they've been jailed, they've been lathi charged, everything. But even previous the Congress government was not ready to cancel the mining, but because of the people's agitation, the Congress government was compelled to write the central government at least out of 5, 3 mines were closed, so they didn't allow. But slowly that was going because of central government's pressure, so they are going to hand over the mining. But soon after the government changed, within 7 days, 50,000 the mature trees were cut, and then people agitated now. So now the Hasdev Aranya has given a Hasdev River, and Hasdev River is the tributary to Mahanadi River, and Mahanadi River comes from Chhattisgarh to Odisha. So once this forest is destroyed through mining, the entire the Mahanadi River will be affected. So this is the crisis. Once you mining, once you destroy forest, once you destroy your river system, then entire the humanity will suffer. That is why we say by our campaign also, National Alliance of People's Movements, myself, Medha Patkar, all people are there. We have resolved to say that there should be a national policy how to use resources. How to, when you allow some mining, we have to see what are the cumulative effective on mining, on forest, on rivers, so that there must be some restrictions. There must be some line of limitations that to what extent we can use our resources in further development, not everything for development. So the national policy necessary. Similarly, till now we have no any law on rivers. We have Anti-Air Pollution Act, we have Water Pollution Act, everything, but we have no any law on rivers. So we need a strong, stringent law to protect rivers, so that any mining cannot be allowed if any river is affected. That is why we say from Brahmaputra Ganga to
Godavari and Sukulya. All rivers must be protected through stringent law like law, and no political party is talking about those things. So in this election, we try to even regionally anything, even National Alliance People's Movement, we released also manifesto. All political parties we wrote also political parties to bring these things to about the manifesto, but matter of regret, the no political party listen to or realize to bring at least commitment at least to protect our rivers. So this is the thing that Hasdev Forest, and also now in Western Ghats also 3 mines are given to Adani, and here in Odisha 5 bauxite mines are given to Vedanta, Birla Company, Adani Company, and so many mines are given to also iron ores are given to Jindal Company. So all the things that we want, there should be a national policy and strong law that can restrict the unmindful mining to protect our resources, not for only the present generation, but also future generations. That is our motive and movement. And we know that this election, the parties did not bring any commitment, but the way that we have created opinion in various states also, this will help us to make more vibrant people's movement in coming years. Even after this new government's form, we will go to the people and we will have democratic rights, we will access our rights, we will protect our 5th schedule, 6th schedule. Because of 5th schedule, We'll come back. we can protect the resources. Now the Gram Sabha Supreme Pesa is there. 5th schedule, the tribal community are owners, not the government nor companies. So that we want to protect the constitutions as well also to bring stringent law to protect our resources, and the people's rights of resources must be respected and must be also preserved. That is our motive. I'll come back to you on 5th schedule and 6th schedule exclusively this week itself. We will do that show so that we can sensitize. So this is Yes. what, and communist parties, though you fought against electoral bonds, what is that you are doing in Western Ghats, in Kerala? Western Ghats, Southwest monsoon, all southern states should be worried now. Adani has been Yes. given 3 mines as per Samantara. Pinarayi Vijayanji, CPM and CPI parties, what are you going to say now? Once you on one side you fight against electoral bonds, and again you are trying to give mines like that to Adani. What will happen to Western Ghats? And Pinarayi Vijayan's own daughter involved in that money laundering, ED has booked a case. What is that communists are going to say? So no party is free from electoral bonds, quid pro quo, corporate companies. And if corporate companies loot our resources and fund political parties, and if we get such type of representatives, what would be the fate of India? Resources, India means people, their rights over resources for the present and future. India, that means people, rights and resources in danger. So wake up call. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. Anyone can debate. My mobile number is 94404-65339, to which Google Pay and Phone Pay is attached. Anyone can participate, but it will be as per rule of law, Constitution, invoking Evidential Act, as we have done now. Thank you very much, sir. Let us all save Thank you. India. Thank you, Mr.